Okay, should we start? सेजल, श्लोक, कौशल, जास्मीन, हर्षा, आयुष. ठीक है. Let's start. Just a second. I'm starting. Okay. So we are starting current electricity. कुछ problems करेंगे हम लोग. First problem I'm starting. So screen is visible to all, right? Screen visible? Okay. So let's start. In the circuit shown, an ideal cell of EMF E is connected in series to a non-ideal voltmeter. This is non-ideal. Just a second. Just a second. I'm restarting. Okay, I'm restarting from this question. Okay. So a cylindrical conductor has length L, cross-section area A. Its conductivity changes with distance x. Now, from as the function sigma is equal to sigma naught into 1 by x. Sigma naught is a constant, and calculate the electric field inside the conductor as a function of x. So we need to calculate E. Now there is Ohm's law that J is equal to E sigma E. So I have to find E, so I'll talk about J. For J is current per unit area, so I will talk about current first, right? Current has V is equal to IR, so I will talk about and current. So first let us find, and it is connected to V, so current is V by R, right? So and V is fixed, so I'll talk about total resistance. Again, total resistance formula for resistance is rho L by A. But the thing is here this rho is 1 by sigma. So this sigma is changing, right? So let us just go to x and take a very small component of dx and let us find its resistance. Now resistance of that small part, I am calling it dr, very small resistance, is equal to length. Length is dx because current is going like this and passing through this. So length is dx divided by sigma is sigma naught by x. So by x will come ahead, and cross section area is a constant throughout. And I'll integrate it. X changes, so I'll get R. X changes from 0 to L. So what do I get? L square by 2 sigma naught A. So that is my total resistance. If we talk about current, then I comes to be V by R. So V is fixed, EMF is V, right? And R is L square by 2 sigma naught into A. Now that is I by A is J, current density. So A is gone. Okay. Now that is my J, and J is sigma E. So basically J divided by sigma. So if I divide this by sigma, then I get E. So electric field is J by sigma. And what is J? J अभी हम लोगों ने find किया है 2V sigma naught by L square divided by what is sigma. Now the thing is sigma again variable है. So sigma is sigma naught by x. तो x ऊपर चला जाएगा. So sigma naught cancelled out. We get E equals to 2V x divided by L square. Option check करो. 2Vx divided by L square. Option A. Any confusion in this? Any confusion? हम लोगों को E चाहिए था, मैंने J फाइंड किया. उसके लिए J के लिए मुझे current by area, current per unit area is J, so I need current V by R, so I found R, then I substituted them all to get E. Clear? Let's move to next part. Next question is a conducting open pipe has shape of a half cylinder of length L. Its semicircular cross section has radius R. Basically this distance which is given, this is R, semicircular cross section,
and thickness of conducting wall is T. So thickness of this wall is T, but T is negligible when compared to R. So you can assume कि ये dt है, width is almost negligible. The resistance of the conductor when the current enters and leaves as shown in the figure A is R1 and resistance is R2 when the current as shown in the figure B is R2. So you need to find R1 by R2. Okay, so let us find. So here in this, current is entering through this cross section and current is coming out from the other cross section. So, and that resistance is R1. So R1 is rho. See, I'm just assuming that they have a resistivity of rho because it is not given. So it is conductor. So I'm assuming resistivity rho. Length, current is passing through this length. So length is capital L by A, area of cross section. The area which I have shaded is the area of cross section, and that area is how much? So first this length is how much? 2 pi r, and width is t. So length into breadth, that is 2 pi rt. 2 pi rt, that is the cross section area, that is r1. Now let's find r2. So r2 is for next figure. In next figure, let me clear some things. So in next figure, current is coming from, basically current is entering from this cross section, and it is exiting from here. So current is traveling all the way like this. Now this time rho, length, the distance traveled by the current is pi r. Wait, मैंने कुछ mistake किया है क्या? It is pi r into t. This is pi r into t, not 2 pi rt. Okay, so it is pi rt only. Now distance traveled is pi r. Distance traveled is pi r. It's like 2 pi r by 2. So pi r divided by cross section area this time is this one which I have shaded. So length is L. Okay, and this width is how much? T. So it is LT. Now you just divide both of them, you get R1 by R2. Pi, this will cancel out. और कुछ cancel out हो रहा है? नहीं. It will become L square and T is in denominator by the way. And pi r, so L square by pi square r square. I think answer is this, option A. Is there any confusion? Any doubt in this question? हम लोगों ने सिंपल फॉर्मूला यूज किया है, R is equal to rho L by A. Next question. I'm moving to next question. Now, this question says, it was found that resistance of a cylindrical specimen of wire does not change. It is important that it is written that it does not change with small change in temperature. So basically resistance is a constant. If the temperature coefficient of resistivity is alpha r, then find its thermal expansion coefficient alpha. So we need to find alpha in terms of alpha r. Alpha r is the thermal is temperature coefficient of resistivity. So now suppose original resistance is R, which is rho original length by A. Some you can also call it R naught is equal to rho naught L naught by A naught, which are, these are the original things. Now if you change the temperature, then what will happen? So suppose change in temperature is delta T, then new resistance becomes, so rho becomes rho naught 1 plus alpha delta T, but alpha you have to use is this alpha r into delta. I'm using delta theta for temperature change. Let us say temperature changes delta theta. So rho becomes rho naught 1 plus alpha r delta theta. Then L becomes L naught 1 plus alpha, because that is the temperature coefficient of length. I am assuming it. Thermal expansion coefficient is alpha. So alpha delta theta divide by next is by A. Area becomes A naught, again 1 plus beta delta theta, and beta is nothing but 2 alpha. It's twice the coefficient of linear thermal expansion, right? So 2 alpha delta theta. Now you just multiply it. So what do you get? So let us see. R dash is rho naught L naught by A naught. In denominator we have 1 plus 2 alpha delta theta.
न्यूमरेटर चेक करो. So 1 into 1 is 1 plus alpha r into alpha r into alpha delta theta square, and then there is this term also, that alpha r delta theta into 1, so alpha r and plus alpha theta into 1, so plus alpha times delta theta, and this will be plus. So this is the term. Now the thing is, here this delta theta square term is going to be 0, because when we are comparing to delta theta and is saying ki small change in temperature, so delta theta ke samne we are neglecting delta theta square we are neglecting. Then next step is r dash. What is r dash? See, he said ki a wire does not change, resistance of wire does not change, means new resistance should also be original resistance r naught only, which is rho naught L naught by A. So this thing will cancel out. It means numerator and denominator has to be same. So 1 plus 2 alpha delta theta must be same as 1 plus alpha r plus alpha delta theta. And that leaves us with 1 will cancel out, that delta theta then cancels out, then alpha should be equal to alpha r. Then only 2 alpha will be same as alpha r plus alpha. Is that clear? So option A. Any doubt? Anyone? Any doubt? Okay, let's move to next question. So let me clear it first. Next is this question. Now, this question is a lengthy one and calculation based. Most of the calculation is there. So question is saying ki a cylindrical conductor is made so that its resistance is independent of the temperature. Again, resistance does not change. It is done by stacking layers of copper, carbon and nichrome as shown in the figure. तो पहले थोड़ा copper लगा दिया, फिर carbon, then nickel, फिर copper, carbon and nickel, and that's how we are making our resistance. Okay, so now he's saying that the length of each copper layer, that is 1 centimeter, and sum of the length of consecutive carbon and nichrome layer is also 1 centimeter. So this entire length is also 1 centimeter. Now, given that resistivity is rho and alpha is temperature coefficient of resistivity, उसने सबका दे दिया, carbon का copper दिया है, carbon दिया है, nickel भी दिया है, all resistivity and alpha are given, right? Now he's saying assume no change in dimension of this segment due to temperature change. We have to find the length of each nichrome segment. Find the length of each nichrome segment. So let us say this is x. This is x, so x centimeter. So this is 1 minus x, and iska length is 1. Now we just need to do the same thing. See, resistance is basically resistance of copper plus resistance of carbon plus resistance of nickel part, and obviously current is passing like this, then they are in series, so I am adding resistance. Now resistance is rho L by A. So cross section area for every part is same, length is different, so I am just writing that resistance is rho copper into length of copper divided by A. 1 by A I am taking out, okay, and plus again rho of resistivity of carbon part, length of carbon part, plus resistivity of nichrome part and length of nichrome part. Now this is R. Now R changes due to what? So see, both of these things are going to change, right? Resistivity will become rho is equal to rho naught 1 plus this alpha. They have given the temperature coefficient of resistivity. So alpha delta T, delta theta. So everything is going to change. So you just need to write that this is equal to original thing, right? So let us say temperature changes delta theta. Then what will be original thing? So let us just say ki original inka resistivity, everything has been given. So rho is, एक second, rho and basically these are rho naught value and alpha values are given. So what will you write? You will write original thing, which is rho copper, length of copper, which is obviously 1, plus rho of carbon into length is L 1 minus x, plus
rho resistivity of nichrome into length, that is x, is equal to rho copper 1 plus alpha delta t. What is the alpha? Alpha copper. I'm just writing alpha cu delta theta plus rho into length also. Length is, by the way, length will change. He's saying लेंथ के बारे में कुछ बोला है उसने. कंडक्टर डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. Assume no change in dimension of the segment due to temperature change. Last line. So length will remain same. Length is still 1. Okay. Then resistivity of carbon into 1 plus again alpha carbon delta theta, and then length is 1 minus x plus resistivity of nichrome 1 plus alpha nichrome delta theta into x. Now you just need to solve this equation. So it is gonna take time, but you will eventually get the answer. You have to solve for x. Is it clear? You just need to put the equation, all the values in the equation. Is it clear? I told you it's just a lengthy sum, time consuming sum. Other things, it is like process is simple. You have written original resistance in terms of resistivity and length, and then you can write in terms of like after temperature change, and it has to be same. So I've just written कि bracket वाला चीज है, that initial is equal to bracket वाला चीज after delta theta temperature change. Is that clear? Method is clear? Any doubt? हर्षा सेजल ने यस बोला है, ठीक है. anyone who is having doubt कि क्या किया है, कैसे किया है, किसी भी step के अंदर? You can just turn on mic and ask. Otherwise I'll move to next question. So next question पे move कर रहे हैं. This question. So this question says that in the circuit shown in the figure, the potential difference between A and B is VA minus VB is 4 volt. Okay. Now find the EMF of the battery. See, whenever he say the difference is 4 volt and VA is higher, तो VB को 0 assume कर लो. This point is 0 volt and this point is 4 volt. And all we need to find EMF of the battery. अब देखो, पहले तो 4 volt potential difference is given across 12 ohm. तो current will flow in this direction. कितना current flow होगा? V by R. V is 4 by R is 12. So that is 1 by 3 ampere current will be flowing. 1 by 3 ampere current will flow in 6 ohm also. And what is potential difference across this? Again, IR. So I is 1 by 3, R is 6. So it is 2 volt. So 2 volt further potential will drop. So potential of this point is minus 2 volt. Is that clear? Now this is 4 volt. This point is also 4 volt. Now this point is minus 2 volt. So potential difference across 6 volt is 6 ohm resistor is 6 volt. So current will be flowing from higher to lower. कितना आएगा? V potential difference is 6 by R is also 6. So 1 ampere current will be flowing. Now ऊपर से 1 ampere current आ रहा है, नीचे वाली branch से 1 by 3 ampere current आ रहा है. So both the currents will add up and they will go like this. So current is 1 and 1 by 3, which is 4 by 3 ampere. So 4 by 3 amps यहाँ से जाएगा. Again it will go through this. So potential at this point is still minus 2 volt because there is no component between the wires. है ना? Now potential will further drop as we are moving in the direction of current. So potential of this point is minus IR. I कितना है? I is 4 by 3. R कितना है? 5. So it is 20 by 3. It will drop 20 by 3. So it is like minus 2. उससे और कम करो, minus 20 by 3. So it is minus 26 by 3. So potential of this point is minus 26 by 3 volt. मैंने V नीचे लिखा है because वो arrow cover कर रहा है. Just a second. This is minus 20 by 6 volt. Now we got the potential of this point. अगर हमें यहाँ का पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि EMF कितना है. Now total current, now just look at these branches. So both the branches, this 4 ohm and this 1 ohm and 3 ohm, that is 4 ohm, both are in parallel. So overall there is 2 ohm resistance, right? Just make a single branch and make it 2 ohm resistor because 4 और 4 parallel में आपको 2 ohm बना देगा. And current which is flowing through it is 4 by 3 ampere only.
नाउ यहाँ पे 4 वोल्ट का पता है, राइट? सो यू इज सो प्लस आई आर, so potential of this point is going to be 4 volt plus I, which is 4 by 3, and R is 2, so that is 4 plus 8 by 3, that is 12 plus 8 by 3, that is 20 by 3 volt. And मैंने और एडअप किया है तो प्लस ही है अभी. Now what is the difference between them? That is EMF. So difference is 20, 20, 40, 46 by 3. That is an option A. Any confusion in this? Anyone? I have started with B का potential 0 volt assume किया, and then A का potential 4 volt assume किया, and then I started finding whatever I could. पहले first I can find the current through 12 ohm, which is the current through 6 ohm. Then I can find current. After finding the potential difference across 6 ohm, I can find current in it. Then current potential difference across 5 ohm I can find, because total current मैंने find कर लिया. Then ये 1, 3 and 4 ohm all combined, and then I made a single resistance so that I got easy answer. Is there any confusion in this part? कहीं पर भी कोई भी part में confusion है तो ask. Any confusion? थोड़ा सा respond fast करेंगे. If there is confusion, please ask. If you don't have confusion, तो write करो, हम लोग आगे move on करते हैं. Okay, I'm moving on. 3 have said yes. I'm moving on to next part. Next part is an infinite network of resistance. Infinite network of resistance has been made as shown in the figure. Each resistance is R. Find the equivalent resistance between A and B. Now think I have connected a battery. So current will go from here. Now I current is going from here. Now the current has 2 paths to go, and both are very identical because B is connected from here. See, rather than connecting from here, बीच middle में connect करो. Just a second. A. Yes. Answer I think A होना चाहिए. Let me do. So basically current will be split symmetrically, right? I by 2, and then further same thing will happen. So can I say this point and this point are equipotential? Again, this point, this point, this point, and this point all are having same potential. तो मैं resistance को थोड़ा सा redraw कर लेता हूँ. First is R, then from this point to these point, which is the same point, I am considering them as a single point. There are 2 resistance connect, so it will be R by 2. Then there are 4 resistance connected between this point and this point, so R by 4, and so on infinity तक जा रहा है. तो resistance series में है, तो total net R will be equal to R net R, इसको R not बोल देते हैं. Net R is R plus R by 2 plus R by 4 plus R by 8. GP बन गया, सम निकाल लो, है ना? Is that clear? Any doubt in it? Is there any doubt? ठीक है. Let's move on to next part. Just a second. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इंटरेस्टिंग है. The network shown, in the network shown, calculate current through the cell. तो सेल से I1 करंट जा रहा है, we have to calculate that, and current through the resistance 2R, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि 2R से कितना करंट पास ऑन हो रहा है वो निकालना है. So first let us redraw this entire thing, and redraw करने से क्या पता चलेगा? First this one and 2R, they can be combined and they can be made a single resistance of R, right? Now there are how many resistance? तो यहाँ से देखो, this is R and this is R, both are reaching, तो ये हो गया R by 2. इसको भी remove करो. First always try to simplify it. Now there are this resistance, then this one and this one and this one. अब मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल से ड्रॉ कर रहा हूँ. This is my V. फिर इस पॉइंट पे पहुंच गया मैं यहाँ पर, एंड देन यहाँ से एक 2R जा रहा है, R जा रहा है. आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस R, मैं इसको लास्ट में ड्रॉ करूंगा, है ना, इस पॉइंट से. एंड दिस इज द अदर पॉइंट, ये वाला. सो इसके बीच में 2R एंड R इज गोइंग फ्रॉम हियर, तो मैंने 2R ले लिया, R ले लिया.
फिर वो दोनों के बीच में कनेक्टेड है 2R, तो यहाँ पे 2R कनेक्ट कर दिया। यहाँ से एंड पॉइंट तक कनेक्टेड है R, तो बेसिकली 2R के आगे वाले पॉइंट तक कनेक्टेड है R। एंड यहाँ वाले एंड पॉइंट, यहाँ से बेसिकली यहाँ से दिस पॉइंट इज सेम एज दिस पॉइंट, यहाँ से कनेक्टेड है R/2 टू द एंड पॉइंट, तो R/2 टिल द एंड पॉइंट। और इनिशियल से एक फाइनल पे कनेक्टेड है R, ये वाला जो R है, ये जिसको मैंने नेग्लेक्ट किया था, ये वाला R, ओके। और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है बैटरी के अदर एंड से। आर यू एबल टू सी अ Wheatstone bridge and a balanced one? Ratio is 2R/R, that is 2, and R/R/2, that is also 2. So how much current will be there from 2R? Zero current, no current will flow from this. तो I2 का आंसर आ गया 0 एम्पियर। नाउ बैटरी की बात करते हैं, इस वायर को हटाओ सीधा, दिस इज 3R, दिस इज R plus R/2, तो 3R/2, so you have 3R R/2 and R in parallel, and parallel करके V/R कर दो, आंसर आ जाएगा। Is that clear? Any confusion in this? किसी को भी? See, this is point A, this is point B, इसी को भी B नाम ही देना है, and this is C, and let's say this is D. तो A to D one is going, A to B one is going, B to D one is connected, D to C and B to C. ये वाला Wheatstone bridge है पूरा। अगर किसी को बहुत इश्यू होता है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर पॉइंट्स एंड देन रीड्रॉ देम, लाइक ए बनाओ और लास्ट में सी बनाओ, बीच में बी और डी आ रहे तो बी और डी बना दो, then you will, when you will connect all the resistance, you will get a Wheatstone bridge. Any confusion in this? Anyone? Is it clear? I'm moving. Next question. Now, in the circuit shown in the figure, cell is ideal, so there is no internal resistance with it, and R2 is equal to 100 ohm. तो ये पता है हमें 100 ohm है। इंटरनल रेजिस्टेंस 200, अब वोल्टमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 200 ओम रीड्स। तो जब हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं 1-2 के अक्रॉस, बेसिकली यहाँ पर, तो इट रीड्स हाउ मच? इट रीड्स, एंड इट इज अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस 200 ओम, सो व्हेन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, इट्स रेजिस्टेंस इज आल्सो कनेक्टेड, एंड इट रीड्स हाउ मच? तो लेट अस से इट रीड्स, इट इज सेइंग इट इज रीड 4 वोल्ट, and when it is connected, that is another scenario, when it is connected, that is again 200 ohm, when it is connected across 1 and 3, and it reads 6 volt, तो यहाँ पे 6 volt रीड करता है। let us say कि बैटरी का टोटल वोल्टेज V ले लेते हैं। then first, पहले तो हम लोग निकाल रहे हैं करंट कितना होगा, and he is asking कि find the what will be the reading of voltmeter between point 1 and 3, that is the potential of battery. What is the potential of battery? वो निकाल के बताओ। They are asking us V, इसको E ले लेते हैं। They are asking us to find E. Now let us start. पहले हम लोग निकाल रहे हैं कि 200 का, see potential difference, voltmeter always tells potential difference across these 2 points. तो potential difference is 4 volt. So what will be the current? So अगर हम current निकालें तो current will be current in the 200 branch, V by R. So V is 4 by R is 200, plus current in the bottom branch, V is 4 by R is R1, that is the current, and same current is passing through next R2 also. So उसके across potential difference कितना हो गया? This times R2 is 100, तो ये हो गया potential difference across second one plus potential difference across first one, which is 4 volt, and this should be equals to E. इस equation में किसी को confusion है? I just written I into R2 plus 4 ohm, ये वाला जो 4 voltage है, this should be the voltage of the battery, because there is battery is ideal, there is no internal resistance, तो small IR की टेंशन नहीं लेना है। Is there any confusion in this equation? Let's write one more, and that equation when it is connected across this, so current निकालते हैं पहले, same process फिर से follow करेंगे। So this is 100, तो उसके across current, उसके अंदर current कितना हो रहा है? V by R in the voltmeter branch, तो V कितना है voltmeter का? एक सेकेंड, 200, my bad, 6, this time it is 6 volt, so V by R, V voltage across voltmeter is 6 volt. I am considering the second case, by resistance of voltmeter is 200, that is current in voltmeter branch ये वाला, then there will be current in this branch also जो 100 ohm वाला है, so again V by R plus V is 6 by R is 100, that is the current in this entire branch which is coming. Now इसको R1 से multiply करो, I don't know R1, then I got potential difference across R1,
plus potential difference across voltmeter and R2 is 6 volt and that should give the E. दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके solve for R1 and then put value of R1 in any one of the equation, you are going to get E, which is asked. Is there any confusion? कैसे solve करेंगे अभी? I made both the equation, just equate them, find R1 and then put the value of R1 in any one of the equation. Any confusion? First equation is basically I R2 plus 4 is equal to E. Second equation is I R1 plus 6 is equal to E. These are both the equation. Any confusion? Anyone? Is there a confusion? ठीक है. 3 are saying no confusion, others are not replying. I meant moving to next question. Next question is, in the circuit shown, one second. Question says, in the circuit shown, an ideal cell of EMF E is connected to series of a non-ideal ammeter and voltmeter. Okay, reading of voltmeter is V0 when the resistance is, this is V0. So initially it is telling potential difference across it is V0. Then it's saying when a resistance is added, that is the second scenario, that when we add a resistance in parallel to voltmeter, basically यहाँ पे एक resistance add किया and how much is resistance we don't know, तो इसको R कर लेते हैं. When we add a resistance in parallel to voltmeter, it tells a new reading and that is V0 by 10. Now and the reading of the ammeter becomes 10 times the earlier value. तो suppose पहले I0 था, now it becomes 10 I0. Ammeter tells current through it. So initially it was I0, now it is 10 times I0. Now we need to find V0 in terms of E. V0 और E के बीच में relationship find out करना है. Question clear? Start करते हैं. So if I say कि ammeter के across potential difference कितना था? So battery is providing total EMF of E. इसमें से V0 battery V0 is has gone across voltmeter. Then potential difference across this will be E minus V0. तो अगर इसके अंदर करंट निकालते हैं हम लोग I0, so that is potential difference across it divided by resistance of the ammeter. That is I am calling RA. RA is the resistance of ammeter. Okay. Now next question. Next he is saying कि when we connect another resistance in it. Again सिर्फ ammeter की बात करेंगे. This time potential difference across this is E minus V0 by 10. Because V0 by 10 is across voltmeter and resistor. तो इसके across कितना आ गया? E by V0 by 10 divided by resistance of this is still RA. मैंने ये वाला resistance बिल्कुल use नहीं किया है. I am just using resistance of ammeter, that is RA. And that should be 10 I0. Current becomes 10 times. Now just divide. I is gone, RA is gone, and you can tell the relationship between E and V, right? So 1 by 10 is equal to E minus V0 divided by 10E minus V0 by 10. So 10 ऊपर चला जाएगा. Now just cross multiply and get the answer. Is that clear? V0, solve for V0. So 10E minus V0 is equal to 100E minus 100 V0. So V0 पूरा उधर इधर लेके आ जाओ. So 100 minus V0 is 99 V0 is equal to 100E minus 10E, that is 90E. So V0 is 90E by 99. 9 से cancel out कर दो. 10 by 11. 10E by 11. A option. Is it clear? क्या क्या किया मैंने उस नए रेजिस्टेंस को कंसीडर ही नहीं किया है. मैंने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर अमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर यूज करके उसके अंदर करंट निकाला है. दैट्स ऑल. एनी कंफ्यूजन? Is this question clear? Okay, let's move to next question. Next question is this. When applied potential difference, question is saying कि when the applied potential difference across a circuit element is increased linearly, basically potential difference, this graph is given. Potential difference is increasing with time. This is time in second.
and potential difference is increased linearly as shown in the figure, the current in the circuit remains constant. तो current constant रह रहा है पूरा. Okay, as shown in the figure, at t is equal to 4 second, the lead wire connecting the element to the source breaks. What will be the value of the element? तो 4 सेकंड तक का सिचुएशन दिया है. 4 सेकंड पे element is gone और wire जो है वो break हो गया है. So circuit is incomplete or whatever happens. He is saying कि can you identify the element, and if you can identify, you need to tell the value of the element also. So option check करो. कैपेसिटर है हमारे पास और रेजिस्टेंस है. Now if you connect resistance, तो एक तो हमारा resistance है original, right? And then if you connect another also resistance, the thing is if you change the potential, then current will also change, right? If you change potential across it continuously, then current through it is also going to change, right? So that is not the option. तो resistance वाले option cancel out हो गए. Now we will assume कि it is a capacitor. अब capacitor है तो क्या हो रहा है यहाँ पे? So let us just make a capacitor over here. So यहाँ पे एक capacitor है. Now is saying कि voltage change हो रहा है और हम लोग assume कर लेते हैं कि इस पे charge है Q. And इसके across potential कुछ है. So I'm considering total voltage as V naught और capacitor का voltage लिख देते हैं. तो we'll write Q is equal to CV. So I'm just writing Q is equal to CV. Now the thing is कि हो क्या रहा है? Voltage change हो रहा है, voltage increase हो रहा है. But problem हो सकती है कि capacitor के साथ. Now he is given some certain things. अगर हम मैं total voltage निकालूं तो that is Q by C and plus I into R. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो I is the current. So अगर मैं I की वैल्यू निकालता हूँ तो it is V minus Q by C. V is the total potential. एक सेकंड मैंने फिर से गड़बड़ कर दी. Just a second. Let us consider this as V only. So total potential is Q by C, potential difference across capacitor plus potential difference across resistor. And from here I am finding I is equal to V minus Q by C by R. Now यहाँ पे क्या हो रहा है कि I constant है, V increase हो रहा है, तो क्या हो सकता है कि ये वाली चीज भी increase हो जाए. Okay, so I am saying कि there is C, this voltage is continuously increasing. So एक सेकेंड क्वेश्चन को एक बार रीरीड करते हैं. When the applied potential difference across a circuit element, this is not the total potential, this is only this part. और मैं इसको V naught ही लिखता है. V naught is बैटरी का जो है, and this is V which is changing. So let us just write V is equal to Q by C. इसके अंदर निकालते हैं dV by dt, इसको differentiate करते हैं. So that is dQ by dt times 1 by C. So dQ by dt is I, so it is like I by C. And what is dV by dt? dV by dt is basically change in potential divided by change in time. तो 4 by 4 1. तो I by C की वैल्यू आ गई. I by C is 1. एंड यहाँ पे देखोगे तो सेकंड में है और वोल्ट में, तो dV by dt प्रॉपर ऐसा यूनिट में, एंड I शुड बी एम्पियर, तो कैपेसिटर शुड बी फेरेड. तो I करंट कितना है, करंट देख लो किसी भी टाइम पे 1 एम्पियर है, तो 1 by C is equal to 1, so C comes to be 1 farad. Is that any confusion? हम लोगों ने ये वाला लास्ट वाला इक्वेशन यूज ही नहीं किया, ऊपर से ही काम चल गया. Is there any confusion? क्या क्या किया मैंने, वापस से बता रहा हूँ. Potential difference was potential difference across that element, and that element is a capacitor. So potential difference is basically Q by C. तो मैंने बस dV by dt निकाला, that is change in voltage divided by change in time, वो 1 आ रहा है ग्राफ से, is equal to dQ by dt which is I into 1 by C. कैपेसिटर कांस्टेंट है और यहाँ पे I की वैल्यू 1 डाल दो तो C की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. हेलो, मेरा आवाज कब से म्यूट है? इज देयर एनी डाउट? आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ठीक है, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a capacitor having initial charge Q naught and capacitance C is connected to a variable resistor R. The resistance R can have values ranging from 0 to R naught. How should we vary R with time such that discharging current remains constant with time? तो
यहाँ से एक कैपेसिटर है, इट इज कनेक्टेड टू आर, आर इज वेरिएबल ऑब्वियसली, हम लोगों को कैसा रखना है कि करंट कांस्टेंट आ जाए। देन आई विल से सी अगर इस पे किसी भी टाइम पे चार्ज q है एंड q n माइनस q, तो ये ऐसे कुछ करंट देगा I, एंड I विल बी हाउ मच, पोटेंशियल डिफरेंस ये जो प्रोवाइड करा रहा है दैट इज q by c डिवाइड बाय v by r, दैट इज द करंट। नाउ इज सेइंग कि I शुड बी कांस्टेंट, तो R को कैसे वेरी करना चाहिए, तो आई विल जस्ट से IR इज इक्वल टू q by c। अब ये बोल रहा है कि एक सेकेंड, सी लुक एट द चार्ज, चार्ज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, राइट? इज दैट क्लियर? चार्ज इज डिक्रीजिंग। नाउ चार्ज जब डिक्रीज होगा विद टाइम इट इज गिविंग द करंट, सो चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। नाउ I को कांस्टेंट रखना है तो एक ही मेथड है कि R को डिक्रीज करो। तो R को जब डिक्रीज करेंगे इट मींस R नॉट टू जीरो की तरफ जाना है, नॉट जीरो टू R नॉट की तरफ। सो लेट्स से इनिशियल वैल्यू इज R नॉट, इनिशियल चार्ज Q नॉट पता ही है हमें, तो इफ आई फाइंड की करंट की वैल्यू कितनी है इनिशियली, दैट इट इज Q नॉट बाय C डिवाइड बाय R की वैल्यू है R नॉट, not zero. Is that clear? This is the initial, this is the current which is a constant throughout. Now is saying कि उसको vary कैसे करना चाहिए, तो Q की वैल्यू अगर लिखे तो Q is charge at any time, right? तो अगर मैं चार्ज लिखता हूँ चार्ज एट एनी टाइम, तो ओरिजिनल चार्ज इज Q नॉट। अगर I करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है देन व्हाट इज I is Q by T, basically the charge delta Q by delta T. So in delta T time how much charge will remain, so how much charge will flow, the charge which is passed is I delta T. तो I am saying कि टाइम T के बाद जो चार्ज बचेगा that is Q नॉट minus I T. We can write this equation only due to, otherwise जो हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है वही लिखना पड़ेगा। This equation we are writing because I is a constant. In real life जब कैपेसिटर को R से कनेक्ट करो, R when R is constant, so, जब R कांस्टेंट होता है तो एक्सपोनेंशियल डीके होता है और जो हमारा जो इक्वेशन है वो आता है। दिस टाइम वी आर राइटिंग I into T as the charge which has left, right? After T duration तो चार्ज की इक्वेशन लिख सकते हैं, तो आई एम जस्ट राइटिंग IR is equal to Q which is Q नॉट minus IT by C, और ये R नीचे चला, एक सेकेंड आई हैव टू फाइंड R, तो I नीचे चला जाएगा यहाँ पर, और अभी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। R is equal to Q नॉट by IC, Q नॉट बाय IC एंड माइनस I कैंसल T बाय C। अब एक काम करो I की वैल्यू रख दो, I की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर में निकाल के, सो Q नॉट बाय IC निकाल रहा हूँ मैं, Q नॉट बाय I विच इज Q नॉट बाय C, तो ऊपर चला जाएगा, एंड R नॉट बाय R नॉट, तो R नॉट भी यहाँ पर चला जाएगा और C यहाँ पर, तो Q नॉट कैंसल, C कैंसल, दिस थिंग इज R नॉट, दिस थिंग इज R नॉट, सो R नॉट माइनस T बाय C। ऑप्शन चेक कर लो। अच्छा सब में R नॉट कॉमन लिया हुआ है तो R इज इक्वल टू R नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस T बाय R नॉट C। इज दैट क्लियर? ऑप्शन ए मैच कर रहा है। एनी डाउट इन दिस? किसी को भी डाउट है इसके अंदर कैसे किया? एनी कंफ्यूजन इन दिस? See, we have written Q is equal to Q naught original charge minus current into time which has passed, और वो हमने इसलिए लिखा है because current is constant, otherwise we cannot write that equation if current is not a constant. Move on करें? I'm moving to next question. This question. So a conducting plate of thickness T, इसकी थिकनेस T है, सो बेसिकली प्लेट है कुछ इस टाइप का है, ये जो है इसका थिकनेस है, ओके, एंड इट इज ऐसा कुछ है प्लेट, सो दिस इज T, दिस थिकनेस इज T, सो कंडक्टिंग प्लेट ऑफ थिकनेस T is in the shape of an arc, its inner and outer rim of form a 30-degree arc of radius R and 2R respectively at point O। तो 30 डिग्री का आर्क फॉर्म हो रहा है एंड दिस इज R एंड दिस इज लाइक 2R, यहाँ से 2R। Electric current flows through the strip along the circular arcs. Basically, current ऐसे जा रहा है as shown in the figure, as indicated in the diagram. So current is flowing like this, ऐसा कुछ। Now, find the resistance of the plate if its material has conductivity sigma. So we have to find total resistance of the entire plate. कैसे find करेंगे? See, generally हम लोग क्या करते हैं, x पर जाके dx का स्ट्रिप काटते हैं और लेंथ के अलोंग जाते हैं, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग अलोंग द लेंथ, आई एम सेइंग कि लेट अस गो फ्रॉम x फ्रॉम हियर
और यहाँ पर ऐसे dx का स्ट्रिप कट कर लो. This dx is very small. This is dx. Now current is passing through this element. Total current इससे पास नहीं हो रहा है, लेकिन part of the current is passing through this. Okay. Now let us just write कि इसका resistance कितना होगा. I am writing dr. तो रेजिस्टेंस, अब करंट ऑब्वियसली ऐसे जाके ऐसे निकल रहा है. ओके, सो मैं इसमें लेंथ उसके अकॉर्डिंग लूंगा. सो रो रेजिस्टिविटी इज रो. एल में इसमें सिग्मा दिया हुआ है, तो लेट अस यूज 1 by सिग्मा. दिस इज रो. एल लेंथ कितनी है इसकी? आर थीटा, दैट इज एक्स थीटा, राइट. थीटा इज 30 डिग्री, वो मैं बाद में यूज कर लूंगा. सो लेंथ हो गया बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इफ यू चेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, then it is this is the strip, right? So ये वाली चीज है, ये dx है, dx, and ये चीज कितनी है? t thickness. This is t and this is d. तो cross section area is t dx. Now this is dr, and ये सिर्फ एक का रेजिस्टेंस है. Let us call dr1. Okay. Now the thing is कि ऐसे कितने सारे रेजिस्टेंस है? They are starting from this point and ending at this point. So all those resistance are connected like this. Like assume that there are infinite resistance. Now all these resistance are in parallel. So if I call them dr1, dr2, then net resistance 1 by r should be 1 by dr1 plus 1 by dr2 plus 1 by dr3 and so on, right? So can I say it is integration of 1 by dr? Now let us just do that integration of 1 by dr. So you'll get total resistance जो हमें निकालना भी है. And then we will integrate x को. So integration 1 by dr, that is इसका रिवर्स करो, sigma t dx divide by x theta. Theta is a constant, the entire theta pi by 6, and x के ऊपर लिमिट लगा दो r से 2r. Now sigma t by theta सब बाहर आ गया. It is 1 by x, तो ln x बनेगा. ln x पे 2r by r, so ln 2. And this is the answer. This is net. This is, by the way, this is 1 by r. तो इसका उल्टा भी करना पड़ेगा. They are asking r. तो इसका फिर से रिवर्स करो. So net resistance comes to be theta. Theta कितना है? Theta is pi by 6. 30 डिग्री है ना? Pi by 6. तो it is pi by 6. रिवर्स करना शुरू करो. Pi सिर्फ बचेगा ऊपर में. Divide by 6 sigma t ln 2. ऑप्शन है 6 sigma t ln 2 pi. ऑप्शन A. Is that clear? Just a second, मुझे कमेंट्स दिख नहीं रहे. Any doubt in this? Anyone? Any doubt? Next part पे move on करते हैं. A tungsten filament carrying current has a constant diameter except a part of it which has half the diameter and rest of the wire, half the diameter of the rest of the wire. So basically कुछ ऐसा सिनेरियो है कि वायर है, कांस्टेंट डायमीटर है, बट थोड़ा सा पार्ट उसका कुछ लेसर डायमीटर का है, एंड दिस इज लाइक डायमीटर, एंड दिस इसका जो डायमीटर है दैट इज d/2. this is d/2, half the diameter. Now is saying assume the temperature is constant within each part and changes suddenly between parts. So basically saying कि इसका constant assume करो, इसका अलग assume करो constant, like constant assume करो, और इसका भी constant assume करो. Now he's saying and it suddenly changes. It doesn't means कि यहाँ से कुछ linear change है, यहाँ पे कुछ temperature है तो इधर का temperature can be anything. Also assume that temperature of the surrounding is very small when compared to temperature of any part of the filament. And what do we have to find? If the temperature of the thick part is 2000 Kelvin, तो इसका temperature is 2000 Kelvin. मैंने कुछ line miss कर दिया है. Then calculate the temperature of thin part. तो हमें इसका temperature चाहिए T. तो पहले हम लोग जनरली इसके वायर के लिए निकालते हैं. वायर के अंदर हीट कितना जनरेट होता है? I²R. Now current which is passing through this must be I. तो करंट इससे भी I ही पास होगा, राइट? सेम करंट इज पासिंग, सो I²R इज हीट. ओके, और हीट के लिए हम लोग ने, मैं रेडिएशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, सिग्मा EA T⁴ माइनस TS⁴. अगेन सराउंडिंग का टेम्परेचर नेग्लेक्ट करना है तो सिर्फ ये खत्म कर देंगे. नाउ स्टार्ट करो. तो I²R is the area of cross section. Now
आई स्क्वायर, आर क्या होता है, रो इज रेजिस्टिविटी, लेंथ है ना, उसकी कोई भी लेंथ हम लोग डिस्कस ले सकते हैं. सो लेंथ सपोज कर लो कि डीएल लेंथ की बात चल रही है, मैं इस स्मॉल पार्ट की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट की बात कर रहा हूँ, दोनों की लेंथ डीएल है. डिवाइड बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा ई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये एक सेकंड, दिस इज नॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हाइल दिस इज सरफेस एरिया. अब ये एक सर्कुलर थिंग है राइट, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया कितना होता है, दिस इज 2 पाई आर इंटू डीएल. इज दैट क्लियर? एरिया ऑफ दिस इज, आई एम कॉलिंग इट, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सी एस बोल रहा हूं मैं से, एंड ये हमारा सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया. So this is the surface area. In area of cross section अगर हम लोग बात करते हैं तो area of cross section is just pi r square. But the thing is कि let us convert both of them in terms of diameter. Diameter में convert इसलिए कर रहा हूँ because they have told कि diameter half हो जाएगा, तो क्या होगा. Again radius में भी रख सकते हो, same answer आएगा because diameter half पे radius भी half हो जाएगा, right? Is that clear? तो this is basically 2r को मैं लिख रहा हूँ, तो this is pi d into dl. Now this dl is one thing. एक सेकंड, इसको l ही लिखते हैं so that there is no confusion. Okay? d is the diameter and ये वाला जो है ये pi d square by 4. Now अगर देखोगे तो यहाँ पे d square का फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे एक d का फैक्टर आ रहा है और यहाँ पे t raised to power 4. तो can I say t raised to power 4 is proportional to 1 by d cube? मैंने सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लिया है सो दैट आई कैन कंपेयर, बाकी चीजें सारी चीजें सेम है. सो नाउ टेम्परेचर उसका, इसका 2000 है, डिवाइड बाय, आई हैव टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर पार्ट, तो दैट डिवाइड बाय 2000 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बिगर पार्ट दैट इज d एंड बाय डायमीटर ऑफ स्मॉलर पार्ट, ये है एक सेकंड, ये बिगर पार्ट का है तो यहाँ पे स्मॉलर पार्ट का है, स्मॉलर पार्ट का इज d by 2 और इसकी पावर 3 आ जाएगी. So you'll get your answer from there. It is 2000 into, यहाँ पे 2 की पावर 3 बनेगा, 2 की पावर 3 is 8 और फिर पावर हम लोग करेंगे 1/4 उसका, तो 8 raised to power 1/4 into 2000. Any confusion in this question? हम लोगों ने हीट वाला जो रेडिएशन है वो यूज किया है. आइडिया इज दैट वट एवर हीट इज डेवलप्ड उससे रेडिएशन हो रहा है और किसी फॉर्म में हीट बाहर नहीं जा रही है. इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? मैंने टेम्परेचर और डायमीटर का रिलेशनशिप निकाला एंड देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी यूज कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं. Just a second. Next question is this. A uniform conducting wire is in the shape of a circle. A uniform conducting wire is in the shape of a circle. The same wire has been used to make its diagonal AB. Basically saying same wire has been used, it means just कि wire का cross section area is the same. That's all. A current I enters at point P, यहाँ से करंट I enters हो रहा है and leaves at diagonally opposite point Q, तो यहाँ से निकल जाता है. AB makes an angle theta with the line PQ. Find current I through AB. इसके अंदर करंट निकालना है as a function of theta. थीटा चेंज हो रहा है तो हमें थीटा के साथ साथ निकालना है. अब इसकी कुछ ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर रेगुलर मेथड. पहले रेगुलर मेथड दिखता है. So basically there are 4 resistance. इस वाले को I am just saying कि rho L by A. See, L is changing in every part, right? Other things are same. So what I am saying is कि एक काम करते हैं, rho is same, area of cross section is same. तो इस पूरे को हम लोग ले लेते हैं कुछ भी एक फिक्स वेरिएबल ले लेते हैं, R naught. R naught is resistance. It just रेजिस्टिविटी पर यूनिट एरिया इनटू लेंथ, तो वो आ जाएगा रेजिस्टेंस. तो इसका रेजिस्टेंस मैं R1 अज्यूम कर रहा हूँ, इसका R2, इस वाले पार्ट का R3, इस वाले पार्ट का R4. नाउ दिस इज थीटा, सो दिस इज आल्सो थीटा एंड दे आर कनेक्टेड लाइक दिस. ये R1 है, R3 है एंड AB का रेजिस्टेंस मैंने नहीं लिखा है, R5. लेट्स कॉल इट R5. तो ये R5 which is a constant by the way. Length is not changing but other things are changing.
दिस इज R2 एंड दिस इज R4, और हमें निकालना है करंट I विच इज कमिंग. सो इन टर्म्स ऑफ थीटा, कि थीटा के साथ करंट कैसे वेरी करेगा, करंट इन दिस पार्ट कैसे चेंज करेगा, नॉट द टोटल करंट, टोटल करंट को I0 ले लेते हैं. नाउ द थिंग इज कि R1 कितना है, R1 की वैल्यू देखो तो R0 टाइम्स लेंथ, लेंथ कितना है इसका, लेंथ इसका R थीटा करके ले लो. सो अच्छा इसको स्मॉल r ले लेते रेडियस को, और उसको R इंटू थीटा, थीटा इज हियर इट इज पाई माइनस थीटा, राइट नाउ, एंड दैट इज सेम एज R4. सिमिलरली R2 और R3 इक्वेट है क्योंकि उनके वायर का लेंथ इक्वल है, एंड दैट इज R0 इंटू R इंटू थीटा. इज दैट क्लियर? और जो हमारा R5 है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, दैट इज R0 इंटू लेंथ ऑफ दैट इज 2R. तो हमने सारे रेजिस्टेंस की लेंथ भी निकाल ली. R0 R को एक और कांस्टेंट अज्यूम कर लो तो इट विल बी प्योरली इन टर्म्स ऑफ थीटा, राइट. नाउ इसका कितना पार्ट इधर जा रहा है वो निकालना है. So now you have to apply Kirchhoff law in this loop and eventually split the current. कि let's say यहाँ से x जा रहा है, यहाँ से I0 minus x, और फिर यहाँ पे कुछ इसके करंट अंदर y जा रहा है. So x is coming, so यहाँ से कितना जाएगा, x minus y इधर चला जाएगा, और यहाँ से जाएगा I0 इधर जाएगा. So I0 minus x plus y इधर जाएगा. Kirchhoff loop law लगाओ. So there are two variables x and y and you have to get y. तो थोड़ा लंबा मेथड है. इज दैट क्लियर? मेथड क्लियर है सभी को? क्या क्या करना है, रेजिस्टेंस अज्यूम करके किरचॉफ लूप लॉ लगाना है. उसमें सारी चीजें एक साथ कांस्टेंट लाइक कॉमन ले लो, R0 into R, और वो चीज हटा ही दो इक्वेशन से, तो आपकी इक्वेशन और ज्यादा इजी हो जाएगी फॉर एक्स एंड वाई. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अज्यूम दैट इट इज थीटा इज 0, तो फिर ये ऐसा होगा, राइट. थीटा इज 0 की बात कर रहा हूँ, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, तो इस टाइप का होगा, इस टाइप का और इस टाइप का. तो इसका बेसिकली R0 इंटू दिस इज पाई R, दिस इज R0 इंटू लेंथ इज 2R, एंड दिस इज R0 इंटू पाई R. ये दो तीनों को तीनों पैरेलल में कर लो और करंट निकाल लो बीच वाले में. करंट थ्रू मिडिल वन विल बी, मैं करंट को स्प्लिट कर रहा हूँ, 3 रेजिस्टेंस में स्प्लिट करना होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग. फास्ट अगर हम लोगों को स्प्लिट करना है देन वी कैन ऑलवेज गो फॉर दिस फॉर्मूला, इनवर्स प्रोपोर्शन वाला. सो दैट इज तुरंत फास्ट कर लो. मिडिल वाला है 1/2R, अदर थिंग्स विल गो आउट, टाइम्स टोटल करंट है ना. तो मैं डायरेक्टली बस वो निकाल रहा हूँ, टाइम्स टोटल करंट आई. तो ये वाला, इसको यहाँ पे एक्चुअली I0 देना चाहिए था, है ना. सारे ऑप्शन में उसने दिया नहीं है. इज इट 1 एम्पियर, I एंटर्स, यहाँ पे I देना चाहिए था, कैपिटल I. So 1/2R upon 1/2R plus 1/pi R plus 1/pi R, इसमें से वो R भी कैंसल आउट करो एंड फाइंड. तो जो भी ऑप्शन थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पे मैच होता है, सो वो ऑप्शन, इसमें से थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड पुट थीटा इज इक्वल टू 90, तो करंट 0 आना चाहिए. थीटा इज इक्वल टू π/2 पर करंट 0 आना चाहिए. किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है और डी में आ रहा है. तो अगेन ये दो ऑप्शन इस मेथड से π/2 से एलिमिनेट हो जाएंगे, और इन दोनों में से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 रखने से. सो देयर इज नो नीड कि आप पूरा करो मैथमेटिकली, आप किरचॉफ लूप लॉ लगाओ, बिकॉज किरचॉफ लूप लॉ इज टाइम कंज्यूमिंग. इज इट क्लियर? ऑप्शन एलिमिनेट इज बेटर ऑप्शन व्हेन कंपेयर्ड टू किरचॉफ लूप लॉ. ठीक है, लेट्स जस्ट एंड द क्लास. 10 o'clock हो गया है. Any confusion in all these questions? See, इसका मेथड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो this is the method which is very lengthy, right? आप ऑप्शन एलिमिनेट करो तो फास्ट हो जाएगा. चलो, I am ending the class. Bye bye, take care. If there is any confusion, please ask.